Yes, hello students. Welcome to PS Group Tuition again. Myself Parvesh sir. Today this video is only for 9th standard and my subject is geometry. In that I am going to teach you the topic trigonometry. And this video is only for the introduction of trigonometry. So first of all we will understand what is the meaning of trigonometry, right? Then we will learn that term related to right angle triangle, then relation, then the important equation. So one by one I will teach you this all four things, right? So first my introduction part in this, what is the meaning of trigonometry? But the question is, what is the meaning of trigonometry? So in this trigonometry word, can you see there are three parts, three categories, right? First is trie. What is the meaning of trie? Trie means होता है three. Trie means three, right? Gona. Gona means what? Gona means sides. Gona means sides. And the last word metron. Metron intersense means measurement. So what is the meaning of trigonometry? The meaning of the trigonometry is three side measurement. Three-sided measurement. मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स मेजरमेंट, राइट? ये था ट्रिग्नोमेट्री. नाउ सम लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये क्या है? एक टाइप ऑफ ब्रांच है मैथमेटिक्स का एंड इट इज यूजफुल टू मेजर द डिस्टेंस. अब लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए एंड इट इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉलॉजी, नेविगेशन एक्सेट्रा. इन दिस फील्ड द ट्रिग्नोमेट्री विल बी यूजफुल. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नाउ the terms related to the right angle triangle. In this, I am going to take the right angle triangle. First of all, I will take the right angle triangle. The name of the triangle is A, B, C. Right? This angle is 90 because it is a right angle triangle. And my angle, my theta at the place, at the point of C. See, in front of C, जो भी थीटा दिया है, जो भी एंगल हम लोग कंसिडर करें, वो एंगल के जो सामने का साइड है, दैट इज कॉल्ड द अपोजिट साइड. अपोजिट साइड. बट कौन से एंगल का? अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी. एंड जो 90 डिग्री के जो सामने रहता है, दैट इज कॉल्ड आवर हाइपोटेनस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट? हाइपोटेनस, ठीक है. एंड रिमेनिंग साइड इज माई एडजेसेंट साइड. उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट side of angle C. I hope you understand. Now, one by one, I will write in this relation sin theta. My trigonometric function sin theta, cos theta, and tan theta. These three functions only we will learn in the 9th standard. Okay. So the formula for sin theta is opposite of angle C according to this triangle. According to this triangle, opposite of angle C upon hypotenuse, right? Hypotenuse. So what is my opposite side? Opposite side is my AB, right? So AB upon hypotenuse is my AC. Now second my function, trigonometric function, right? Cos theta. Cos theta is my adjacent of angle C. Adjacent of angle C upon hypotenuse. So hypotenuse. What is my adjacent side? Adjacent side is my BC. And hypotenuse is my AC. Now the last one, tan theta. Tan theta, the formula for tan theta is opposite side of angle C upon adjacent side of angle C. Adjacent side of angle C. So my opposite side is AB and my adjacent side is BC. Right? This is my terms related to right angle triangle. If I am taking the angle at point C, then we can write this formula like this. Then जो भी एंगल कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो A हो या C हो, उसके सामने का जो साइड रहेगा दैट इज माय अपोजिट. 90 के सामने का दैट इज माय हाइपोटेनस और जो रिमेनिंग साइड बचा दैट इज माय एडजेसेंट साइड, राइट? इट्स अ टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल. नाउ माय नेक्स्ट रिलेशन अमंग द ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन बताना है. So first of all, understand the relation. First of all, understand the trigonometric function. There are the 6 trigonometric functions: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and the last one cosec theta. There are the 6 trigonometric functions. 6 trigonometric function. So first of all, I will
to you the relation between them. So first, sine is the opposite or you can say the reciprocal of cosec theta. Sine is the reciprocal of cosec theta. So you can write sin theta will be equal to 1 upon cosec. Sin theta जो है वो उल्टा है cosec theta. If you are getting the answer sin theta 4 upon 5, then you can say cosec theta is 5 upon 4, right? It's the opposite. Same cos theta is the reciprocal of sec theta and tan theta is the reciprocal of cot theta. So you can write the formula tan in cos theta के लिए cos theta is equal to 1 upon sec theta, right? Or either you can write sec theta is the reciprocal of cos theta, right? Tan theta is the reciprocal of cot theta. So you can write tan theta is the reciprocal of cot theta, right? These all are the relation. And one more formula for tan theta, you can write tan theta will be equal to sin theta upon cos theta. If I am giving you formula, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, but tan theta is the reciprocal of cot theta, right? Tan theta जो है वो cot theta का opposite है, उल्टा है. So if I am giving you the formula tan theta will be equal to sin theta upon cos theta, then you can say that cot theta will be equal to cos theta upon sin theta, right ना? क्यों ऐसा लिखा? sin tan theta क्या है? sin upon cos है, but tan किसका उल्टा है? cot का. तो cot theta उसका उल्टा रहेगा cos upon sin, right? sin theta का उल्टा कौन है? cosec theta है. cos theta का उल्टा कौन है? sec theta है. tan theta का उल्टा कौन है? cot theta है, right? I hope you will understand this formula, right? And the last one, the important equation in the trigonometry. Important equation खाली एक ही formula है, sin square theta plus cos square theta will be equal to 1. According to your syllabus, only one formula is given. Actually ये 3 फॉर्मूले हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से एज पर योर 9th स्टैंडर्ड सिलेबस only one formula is given in your textbook, right? Okay, so I hope you understand this all 4 concept briefly, right? So only this is the introduction of trigonometry. I hope you like my video. So for more updates, please इसको like कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इसी तरह और भी वीडियोस आपको मिले तो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल गेट द न्यू वीडियोस. मैं आपके लिए हर एक वीडियो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो डालते रहूंगा. आप इसी तरह इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसे फॉरवर्ड भी करते रहिए. तो थैंक यू सो मच.